Hi students, good evening to all of you and welcome to my channel. Students, today's topic is another important phylum of kingdom Animalia. The largest phylum of kingdom Animalia as it contains about 10 lakh of species. That is why it is the largest phylum in kingdom Animalia. And this largest phylum is Arthropoda, which is derived from two Greek words. Students, one is arthros, another is podos or podium. Arthros meaning होची jointed एवं podium meaning होची foot. So foot or appendages. So these organisms included in this phylum, they contains jointed appendages. That is why the name is Arthropoda. So phylum Arthropoda having these general characters or salient features which I have already written in my whiteboard, and we will discuss about these characters. So phylum Arthropoda, the term was first coined by von Siebold. As you know, it is the largest phylum in kingdom Animalia. It contains about 9.5 lakh of species. So more species present in this phylum, that is why it is the largest phylum in kingdom Animalia. Jointed legs are found as per the name Arthros. Jointed legs are found. Body is externally segmented. Body segmentation achi, but that segmentation occurs externally. So it is visible from externally. That jointed appendages as well as segments of the body segments. Body is divisible into normally जदि हमें देखिबा ता बॉडी टा को बा एई फाइलम रे थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी कर बॉडी डिवाइड हिच तीनटा पार्ट रे. The anterior part that form the head, just below the head the thoracic region, and it is called as thorax, and the rest part of the body, that is abdomen. So it is divided into three parts, that head, thorax and abdomen. Body is covered by chitin. A hard exoskeleton covers the entire body, and that is called as chitin. That chitin is formed of polysaccharides. ताले मानकर बॉडी रे गोटे हार्ड कवरिंग कवर करिछि जोटा को कहै छै काइटिन, एवं ए काइटिन तयारी हेछि पॉलीसैकेराइड रे. पिले माने जानि थिबा कार्बोहाइड्रेट रो गोटे क्लासिफिकेशन रे कार्बोहाइड्रेट रो पॉलीसैकेराइड्स मींस इट कंटेन्स मेनी मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स. सर्कुलेशन इज ओपन टाइप एंड कैपिलरीज आर एब्सेंट. पिले माने ओपन सर्कुलेशन होछि. सर्कुलेशन नॉर्मली दी प्रकार रो गोटे होची ओपन सर्कुलेशन आ गोटे होची क्लोज्ड सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन ताको कहिबा when blood flows through open spaces of the body, that is called as cyanosis, means small cavities that filled with blood. So blood flows through the open spaces of the body. So here blood has direct contact with the body cells. So the volume of blood is more, the pressure of blood is less, capillary networks are absent, but blood vessels are partly or partially present. ये प्रकार circulation को हमें कहिबा open type of circulation, and it is one of the inefficient type of circulation. Respiration occurs through gill, trachea, book gill, book lung. These are the respiratory organs of phylum Arthropoda. जेहेतु एते गुडे ऑर्गेनिज्म अछंती सेमानकर रेस्पिरेशन मध्ये विभिन्न प्रकार रो एवं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर कंसर्न फॉर रेस्पिरेशन. दे आर ट्राकिया बा विंड पाइप जहा को कहा जाउछि. ट्राकिया, गिल, बुक लंग्स, these are the respiratory organs that exhibited by the organisms present in phylum Arthropoda. Students,
bilateral symmetry occurs in the organisms. Those are included in this phylum, and their body plan is tube within a tube. So advanced body plan. Xylem is reduced and filled with blood, and that xylem is called as hemocoel. As the xylem is filled with blood, it is called as hemocoel. पिले माने हेम रा मीनिंग होची ब्लड एवं सील रा मीनिंग होची सीलम बा बॉडी कैविटी. So its body cavity is filled with blood, hence it is called as hemocoel. Then excretion occurs by green glands. There are many types of excretory organs are also found in this phylum. कारण जेहेतु अधिक प्रकार ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व अछंती ए फाइलम रे सेमानकर एक्सक्रेटरी ऑर्गन गुडी कहला ग्रीन ग्लैंड, कोक्साल ग्लैंड एंड माल्पिगियन ट्यूब्स. as you have already studied in your 10th class excretion रेचन रे तमे पढिथिल झिंटिका रे रेचन बा ग्रास होपर माल्पिगियन बॉडी आर small tubular structures that present in bundles in between the junction of that midgut and hindgut. पिले माने midgut और hindgut रो मिडर स्थळीबा जंक्शन रे 60 रु 90 रु 150 पर्यंत सरु सरु सूता भलिया स्ट्रक्चर बाहर थाए, ब्लाइंड ट्यूबुल बाहर थाए, ताकू कहा जाउची माल्पिगियन ट्यूबुल, and it beats on the hemocoel to separate that nitrogenous waste. ये हेमोसिलोमिक कैविटी रे खूब जोर रे हेमोलिम्फ रे जोर जोर बाडे हवा फल रे ये कोन करबो एक्सट्रैक्ट करबो सेतु रिमूव करबो नाइट्रोजनस वेस्ट. पिला माने ये हेमोसिल भीतर थिबा ब्लड को कहा जाउची हेमोलिम्फ. आज द ब्लड इज कलरलेस, हेमोग्लोबिन नाही तेनु कलरलेस, तेनु ये कलरलेस ब्लड को कहा जाउची हेमोलिम्फ. आज इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिम्फ. पिला माने हमें ब्लड और लिम्फ दीटा फ्लूइड कनेक्टिविटी सु पढ़िबा. ए लिम्फ होची कलरलेस फ्लूइड दैट प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस. देन आर ब्लड को कहा जाउची हेमोलिम्फ. देन कंपाउंड आईज फॉर मोजाइक विजन. पिले माने सिंपल आई आ गोटा होची कंपाउंड आई. कंपाउंड आई हला इट इज एसोसिएशन ऑफ मेनी आईज. द आई लेंस इज डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स which is called as ommatidium. Each part is called as ommatidium. ताहले जेहेतु आर आईटा अनेक गुड़िए कंपार्टमेंट रे विभक्त होइछि आकु कहा जाउछि कंपाउंड आई एवं प्रत्येक पार्ट रे प्रत्येक ओम्माटिडियम रे ये पिक्चर को विजुअलाइज करूछि एवं सबतक पिक्चर को मेळे कि ये गोटे कंप्लीट पिक्चर तयारी करूछि. So it is complex type of vision that exhibited by arthropods, and that type of vision is called as mosaic vision. पिले माने parental care also seen in these organisms. Parental care है looking after their newborn individuals. बा जो माने नुआ करी जन्म होथिबे young individual से माने को caring करिबा, that is called as parental care, which is exhibited in the organisms that present in this phylum. पिले माने एमानकर एंडोक्राइन ग्लैंड अछि. से एंडोक्राइन ग्लैंड है कर्पोरा लाटा गोटे प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड जहा कॉकरोच रे अछि. ए एंडोक्राइन ग्लैंड गुडी को हार्मोन सिक्रेशन करंती, किंतु इंसेक्ट मानकर फेरोमोन सिक्रेशन करंती, which attracts the other partners. Sexes are separate. पिले माने तब माने जानी छो sexes separate माने sexual dimorphism is well established. That is dioecious. So these are dioecious. Male females are separated. These are oviparous. पिले माने organism को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि. गोटे हला oviparous आ गोटे हला viviparous. Oviparous सही माने को कहिबा those animals laying eggs, जो माने अंडा दियंती से माने को कहिबा ओविपारस, एवं जो माने छुआ जन्म करंती से माने को कहिबा विविपारस. ताहले
फाइलम आर्थ्रोपोडा रे थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी को ओविपारस एंड सम शोज दैट पार्थेनोजेनेसिस क्लास इंसेक्टा रे थिबा एनिमल मानन ठारे मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस पिले माने पार्थेनोजेनेसिस ताकू कहंती इट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन ताले एक फर्टिलाइजेशन हबनी समायन हबनी एक डेवलप्ड इनटू ए यंग इंडिविजुअल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोजेनेसिस occurs in case of क्लास इंसेक्टा रे थिबा ऑर्गेनिज्म माननकर मेल इंडिविजुअल माननकर ठारे देखा जाए पार्थेनोजेनेसिस the males are produced by the special type of reproduction that is called as parthenogenesis. Here fertilization is internal and development is direct or indirect. Mostly it is direct, but some are have indirect development. And fertilization is internal. पिले माने कहिथिली internal fertilization ताकू कहिबा when the fusion of that male and female gamete occurs within the body of mother. ताहले बॉडी भितर फ्यूजन हेले जाइगोट तैयारी हेले such type of fertilization is called as internal fertilization. पिले माने जदी बॉडी बाहर फ्यूजन हबो जाइगोट तैयारी हबो such type of fertilization is called as external fertilization. किंतु एमानन कठार देखा जाउथिबा fertilization है internal fertilization. So let us come to its classification. As it is the largest phylum in kingdom Animalia, this phylum is subdivided into 4 different subphylums. चारिटा सबफाइलम रे विभक्त करा जायछि. प्रथम सबफाइलम है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा. पिले माने ट्राइलोबाइटोमॉर्फा रे जो ऑर्गेनिज्म गुडी को अछंती दे आर fossils or extinct marine arthropods. एमाने सामुद्रिक प्राणी थिले एमाने फसिल बा जीवाश्म आकार रे आमे समान को पाइचे एवं एमाने एक्सटिंक्ट अर्थात एमाने विलुप्त हो जाइछंती. दे आर नॉट प्रेजेंट एट वर्तमान एट प्रेजेंट दे आर नॉट प्रेजेंट. सेकंड सब फाइलम इज चेलिसेरेटा. चेलिसेरेटा रे थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी कर बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफालोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. पिले माने सेफालिक रीजन हैला हेड रीजन, थोरैक्स हैला चेस्ट रीजन. ताहले सेफालिक रीजन आ चेस्ट रीजन दुईटा जाक मिसी जाइछि फ्यूज हो जाइछि ताकू कहला सेफालोथोरैक्स रीजन एंड रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एब्डोमेन. दे possesses 4 pairs of legs. एई सबफाइलम रे थिबा ऑर्गेनिज्म बा आर्थ्रोपोड मानकर 4 pairs of legs are there, and it is further subdivided into 2 classes. Class 1 is Merostomata. These are marine abdominal appendages are present, and the example is king crab, that is Limulus. And class 2 is Arachnida. These are terrestrial abdominal appendages nahi एवं एग्जांपल होची स्कॉर्पियन और स्पाइडर. सबफाइलम 3 है मैंडिबुलाटा. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ताहले एमानकर बॉडी तीन भाग रे विभक्त होइछि. एंटीरियर पार्ट हेड, देन इट इज फॉलोड बाय द चेस्ट रीजन दैट इज कॉल्ड एज थोरैक्स, एंड लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एब्डोमेन. एंड इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 4 subclasses, and the first class is Crustacea. Class Crustacea रे थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी का aquatic body divided into cephalothorax and abdomen. 5 pairs of biramous legs are present. पिले माने biramous माने the appendages is bifurcated towards its ending. शेष बेले को bifurcate हेतिबो. चिंगुडी रो गोड़ जेमति देखिथिबो गोटे बाहर थिबो तापर दी फाड़ हेतिबो तार कहती बाइरामस लेग. आर एग्जांपल है प्रॉन और क्रैब. पिले माने क्लास 2 है चिलोपोडा. चिलोपोडा आर द सेंटीपेड्स. पिले माने सेंटीपेड माने 100 लेगर्स.
जो मानकर 100 गोड़ थी एवं प्रत्येक सेगमेंट गोटे पेयर गोड़ थी प्रत्येक सेगमेंट रे एग्जांपल है स्कोलोपेंड्रा बा तेंतुलिया बिछा तापर क्लास 3 है डाइप्लोपोडा पिले माने डाइप्लोपोडा contains the organisms which have thousands of legs. They are millipedes. हजार गोड़ थिबा आर्थ्रोपोडा each segment एमानकर प्रत्येक सेगमेंट रे दीटा पेयर रो गोड़ थाए एग्जांपल है जुलस एवं क्लास 4 है हेक्सापोडा बा क्लास इंसेक्टा बोली ताको कहा जाउची जोथिरे सर्वाधिक एनिमल अछंती एवं दे इनक्लूड्स दैट पिले माने हेक्सापोडा अछि हेक्सार मीनिंग होछि 6 पोडियम रा मीनिंग होछि लेग बा फुट ताले 6 गोड़धारी प्राणी माने इतरे अछंती यार एग्जांपल होछि मस्कीटो हाउस फ्लाई कॉकरोच बग इत्यादि and the last subphylum is Onychophora. Onychophora comprises of terrestrial arthropods. These are otherwise commonly called as velvet worm. These are short, unsegmented endings in claws. Claws गुड़िक unsegmented है से सड़क claws माने पंजा गुड़िक एवं यार एग्जांपल होछि पेरिपाटस पिले माने पेरिपाटस इज टर्म्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन annelida and arthropoda कारण पेरिपाटस पाखरे किछि annelidian character अछि in other hand it also possesses the characteristic feature of the arthropoda ताले फाइलम arthropoda आ फाइलम annelida उभय फाइलम रो कैरेक्टर एई ऑर्गेनिज्म पेरिपाटस पाखरे देखा जाउथिबारु पेरिपाटस is the connecting link कहा कहा भीतर annelida and arthropoda annelida एवं arthropoda मध्य थिबा कनेक्टिंग लिंक होची पेरिपाटस जहाँ पाखरे on one hand it possesses that annelidan character in other hand it possesses that arthropoda character. So students this is all about that character and classification. Then I will discuss about that advanced character over that annelids. Annelid mananko ठारू एमाने को गुणरे अधिका से विषय आलोचना करें. So the advanced characters that these organisms exhibited over that annelids. कारण annelid होचे आ पूर्व फाइलम से annelidian character ऊपर बा organism गुडी कठे थिबा character ठारू आ कोन advanced character ए फाइलम आर्थ्रोपोडा रे अछि. पिला माने head is completely distinct कारण body divide होची head thorax and abdomen. So head is completely distinct in this phylum. Jointed appendages are there. The appendages present in these animals are mostly jointed. And the exoskeleton, another advanced character is exoskeleton is present in the form of chitin, which is formed of polysaccharides, which protect the organism from external injuries as it covers the entire body. And presence of endocrine glands, it secretes hormones, but I have told you in case of insects pheromones are the secretions secreted from the endocrine glands. And the respiratory organs that exhibited by these arthropods are trachea, buccal. These are the peculiar character to this phylum and advanced character over that annelids. And next advanced character, they possesses that compound eye for mosaic vision. So students, this is all about that general characteristics, salient features, classification and advanced character of phylum Arthropoda.
So thank you.